जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? ठीक हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ ऐसी एग्जांपल्स लेके आया हूँ, जैसा कि लास्ट लेक्चर में आई हैव टोल्ड यू दैट we are going to take some kind of examples with the different kind of signs. So if we remember that in our last questions or in our last video that we factorize the trinomial with the positive signs. So now this in this trinomial or in this quadratic equation we have some kind of different signs. First one is negative and the second one is positive. So इसको अब हम किस तरीके से जो है वो सॉल्व करेंगे, तो आपको मैं इसका एक आसान तरीका बताता हूँ कि आपने इस एक्स स्क्वायर को इसी तरीके से नीचे लिख लेना है, ये माइनस का साइन इसी तरह आ जाएगा। अब आपको याद होना चाहिए कि दैट वी ऑलवेज स्प्लिट दिस थ्री टर्म और दिस ट्राइनोमियल इन 4 टर्म्स। सो इसके लिए जो दो नंबर हम फाइंड आउट करते थे उसके लिए हम दरमियान में कुछ स्पेस छोड़ देंगे ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो। सो we are going to give some space for the first number, that ये वाली स्पेस जो है वो हम छोड़ देंगे। उसके बाद ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई करके, तो माइनस प्लस माइनस ये स्पेस छोड़ के यहाँ पे एक माइनस का साइन लगा देंगे। सो फर्स्ट साइन विल ऑलवेज बी द सेम एंड द सेकंड वन when we multiply this sign with this one, so minus plus minus, ये भी मैंने आपको अपने एक लेक्चर में पहले बताया था, साइंस की मल्टीप्लिकेशन सिर्फ टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ये कोई ऐसा जेन्युइन रूल नहीं है, लेकिन एक बात समझाने के लिए स्टूडेंट्स को हम इस तरीके से बताते हैं। सो दिस साइन मल्टीप्लाई बाय दिस साइन माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस is equal to minus. So I'm going to give some space for the second number, and then the last number is 8 plus 8. So these two spaces for those numbers that we have to find, if we multiply the numbers, then we get the answer 8, and if we add or subtract, so we will have to get the number 6. So these two signs showing that if you get the same signs, then you have to add the numbers. ये एग्जाम्पल भी उसी एग्जाम्पल की तरह है जिस तरीके से हमने प्लस के साइंस के साथ जो दो एग्जाम्पल्स हमने अपने लेक्चर्स में देखी हैं। तो it means कि we have to find the numbers. If we multiply, then we get the answer 8, and if we add why addition? Because if you got the same signs, then you will have to add the numbers. If you got the different signs, then you will have to subtract the numbers. So remember this rule. If you have the same signs, then you have to add the numbers to get this answer 6. और अगर आपने different signs हैं तो फिर माइनस करके ये आंसर लाना है। So just focus on this example that you have same numbers. So we have to find the numbers that we multiply with each other, then we get the answer 8, and when we add the numbers we have to get the answer like 6. So अगर आप थोड़ा सा इसको सोचें
तो आपके पास कौन से दो नंबर्स हैं जिनको ऐड करने से 6 आए और मल्टीप्लाई करने से तो मल्टीप्लाई करने से आपके पास यहाँ पे 8 आए. So the numbers two numbers that are 4 and 2. These are the two numbers that if we multiply with each other, then we get the answer 8. And when we add these numbers, then we get the answer 6. So what we're going to do, we will write down these numbers like -4. So should have been written over there. So -4x -2x. So these are the two numbers that we have written over there to simplify this expression. So now, same like as it is we have done before, that make two pairs in this expression. So if you see what's the common in these two terms, so x is the common, so take the x common, then the remainder part is x minus 4, and then take 2 as a common, so you will get the answer in the parentheses that 2 ones are 2, and then x is remainder. And now the important thing, that this sign will multiply this sign, or this sign will divide this sign. Minus plus minus, so यहाँ पे आपके पास माइनस आ जाएगा. ये रूल आपने याद रखना है कि जब साइंस को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो different signs always give the negative sign and same signs always give the positive sign. So this minus and this plus will give you the sign negative. So and 2 4s are 8. तो अब ये देखें, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम हो गई. इट मीन्स कि हम क्वेश्चन जो है वो सही कर रहे हैं. सो x minus 4 कॉमन ले लेंगे, x minus 4, and then what will be the remainder part? That this x, because this thing always already we have taken as a common, so x यहाँ पे आ जाएगा और ये माइनस और ये x minus 4 यहाँ से कॉमन ले लिया हुआ, तो आपके पास यहाँ पे x minus ये वाला 2 जो है वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा. So that's the answer of this expression when we factorize this trinomial. So we get the answer this. So to check the answer, if we multiply them two things which are in the brackets, so we will get the answer this. So this one is the simple example of factorization of trinomial with different signs. The first sign is minus and the second sign is positive. So different signs में आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि पहला साइन उसी तरह आ जाएगा, दूसरा साइन जो है वो हमेशा this sign will multiply by this sign, और ये आपके पास माइनस यहाँ पे आएगा. और सेम साइंस आपको याद रखने हैं कि जब सेम साइंस होंगे तो आपके पास जो दो नंबर्स होंगे वो मिडल टर्म वाले नंबर से हमेशा छोटे होंगे. ये आपने चीज़ अपने ज़हन में रखनी है. तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो कुछ और एग्जांपल्स लेंगे विद डिफरेंट साइंस. उस वक्त तक अपना ध्यान रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में जो वीडियोस अपलोड हों वो आपको समझने में आसानी हो सके. तो अपना ध्यान रखिएगा. इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. खुदा हाफिज़.